तो दिस इज़ द कोडिंग सेशन ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो पहले तो हमको लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम प्लेन पाइथन में यहाँ पे कोड करने वाले हैं। हाउ वुड वी डू दैट? सो फर्स्टली हम मैथ लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेंगे फॉर सिग्मॉइड फंक्शन, फिर रैंडम लाइब्रेरी ताकि हम वेट्स और बायसेस को पहले रैंडमली असाइन कर सकें। फिर सिग्मॉइड फंक्शन को हम डिफाइन कर लेंगे किसी भी एक जेड के लिए। sigmoid then it would return 1 divided by 1 plus math dot exponential of negative z. Then we would define binary cross entropy of y predicted and the true value of y बाइनरी, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक्स। सो पहले तो हो सकता है कि हम लॉग के अंदर ज़ीरो टर्म दे दें। उससे बचने के लिए हम पहले लॉग के अंदर चेक करेंगे ताकि हमको ज़ीरो टर्म नहीं देनी है। उसके लिए अगर वाई प्रेडिक्टर हमारा ज़ीरो है तो हम उसको ज़ीरो से थोड़ी ऊपर की वैल्यू देंगे। सो वी वुड डिफाइन ई पी इज इक्वल टू 1 e minus 15, very small, y predicted is equal to maximum of, firstly minimum of y predicted और 1 minus ep और अदरवाइज ep। सो ताकि हम y predicted के अंदर ज़ीरो ना रख दें, so we would return minus y true times math dot log y predicted plus 1 minus y true times math dot log 1 minus y predicted. सिंपल, इट इज़ फ्रॉम थियरी। तो अब हो सकता है हमारे वेट्स और जो फीचर्स रहे एक मैट्रिक्स रहे। सो डिफाइन प्रोडक्ट रूल फॉर वेट्स एंड फीचर्स, देन जस्ट रिटर्न द सम ऑफ डब्ल्यू आई टाइम्स एक्स आई फॉर डब्ल्यू आई कॉमा एक्स आई इन matrix multiplication zip w comma x zip, return that. So let's make a class to keep our code clean. Logistic regression define init initializer constructor। अब इसके अंदर हम पहले तो एक लर्निंग रेट डिफाइन कर देते हैं जो कि हम चेंज कर सकेंगे बाद में। epoch हम रख देंगे 1000 फॉर नाउ। सो सेल्फ डॉट लर्निंग रेट इज इक्वल टू लर्निंग रेट सेल्फ डॉट epoches इज इक्वल टू epoches। देन वेट्स और बायसेस का मैट्रिक्स बना देते हैं यहाँ पे। सेल्फ डॉट वेट्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स सेल्फ डॉट बायस इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे एक जो scikit-learn जैसी लाइब्रेरीज में लॉजिस्टिक रिग्रेशन के साथ एक फिट फंक्शन आता है जो कि मॉडल के अंदर डेटा को फिट करता है। सो फिट सेल्फ एक्स और वाई, हम दो मैट्रिसेस फिट कराएंगे इसके अंदर। हम लेन फीचर्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स ऑफ 0। सो लेट्स जस्ट डू कैपिटल एक्स क्योंकि बाय कन्वेंशन। देन हम वेट्स को रैंडमली सिलेक्ट करेंगे। सेल्फ डॉट वेट्स इज इक्वल टू रैंडम
dot uniform from minus 0.01 to 0.01 for इन रेंज, मतलब रिपीट करो इसको कितने टाइम, जितने फीचर्स है, लेंथ ऑफ फीचर्स तक। देन सेल्फ डॉट बायस को हम 0 रखेंगे फॉर epoch इन रेंज सेल्फ डॉट epoches, epoches, I misspell things, okay. So total loss is equal to 0 for xi yi in zip कैपिटल x एंड y, मतलब उन दोनों की एक जिप बनाएंगे, टपल रहेगा वो एक। z इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ डॉट वेट्स एंड द करंट x प्लस सेल्फ डॉट बायस, हमारा z रहेगा। अब y प्रेडिक्टेड में हम उसको फीड करेंगे, y pred is equal to z, sorry, sigmoid of z, then loss would be binary cross entropy loss of yi and y predicted, then total loss plus equal to loss, simple. Then set the gradients, dw dz is equal to, सिंपल ग्रेडियंट रखेंगे, pred माइनस, सॉरी, y pred माइनस y I, the difference of them. Then for j in range length of features, जितने ज़्यादा फीचर्स है, सेल्फ डॉट वेट्स का वो एलिमेंट, jth एलिमेंट माइनस इक्वल टू सेल्फ डॉट लर्निंग रेट इंटू dz इंटू xi का j, सिंपल एज दैट। देन सेल्फ डॉट बायस माइनस इक्वल टू सेल्फ डॉट लर्निंग रेट times dz. Then if we would like to print after every 100 epoches, if epoch percent 100 equal to 0 or epoch equal to self dot epoches minus 1 on the last epoch, then print f string epoch and the loss would be loss, total loss, divided by length of x, and formatting 4f, let's say. Then just define a function for def predict self and x for any random x. So what would we return? We would return sigmoid of product of self dot weights and xi for xi, 8 minute, self dot, okay, xi is not defined, plus self dot bias for xi in x. Okay, so we want to predict the probability first. Define predict p and define predict, so it would predict a binary value self or x, return 1 if p greater than 0.5 equal to, else 0 for p in self dot predict
probability of x. So that's it. Let's say we have an x equal to 0, 0, 0, 1, 1, 0 and 1, 1. Y is equal to 0, 0, 0, 1. Model equal to logistic regression, LR equal to 0.1 and E purchase is equal to 1000. And model dot fit capital X and Y, and just print prediction model dot predict for X, and print probabilities TIES would be model dot predict P X, right? So let's just use that Python. Let's say Python logistic regression dot py. So the predictions are 0, 0, 0 and 1, exactly what we needed. It is an AND gate, so the probabilities would be 0, 0, 0 and 1. बिकॉज हमने जो फिट करवाया था वो मॉडल भी सेम था, इसलिए ये एग्जैक्ट सेम देगा, बट हम इसको नए डेटा के साथ यूज़ कर सकते हैं. सो दैट वाज आवर लॉजिस्टिक रिग्रेशन कोड. सो थैंक यू एंड होप दैट यू लाइक्ड इट.